अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा जो बेसिक मकसद है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो हम ये कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं अंडरग्रेड लेवल पे। तो इसके लिए हमने आज एक कैरियर टॉक रखी है। वी हैव विद अस डॉक्टर हालिमा अहमद खान, he is expert in project management, and we have Dr. Kamil Hassan, he is also expert in project management, and myself, Dr. Ahmad, I have PhD in supply chain management. So, at Riphah, we are working in Riphah School of Business and Management, और हमारा जो फोकस होता है we are focusing on कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जब वो यहाँ से बैचलर प्रोग्राम करके निकलें तो वो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की, तो लोकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की उसमें मीट कर सकें। तो आप अभी तक वी आर ऑफरिंग 3 बैचलर प्रोग्राम्स, BS in management sciences, BS in accounting and finance, and BBA program. At master's level, we are offering 4 programs: MS project management, MS in engineering management, and MS in management sciences, and 2 years MBA program. From next year, we will have MS in healthcare management, we will have MS in accounting and finance, and BS in project management. From this fall of fall 21, we are offering 2 new courses: BS project management and supply chain management, and BCom 4 degree program. So today the talk is about the BS project and supply chain management. So before that, I must say, for any university, the core strength or the main driving force is the faculty. So alhamdulillah, we are lucky, we have experts जो कि हमारे पास जिनके ऐसी फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है और एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है। फॉर एग्जांपल, several years of experience with the PMI, he has conducted different projects. We have Dr. Kamil Hassan, he has also PhD in project management, and he has several years of experience in the project management. So today I would like to ask them, please आप अपने बताएं कि आपकी क्या एक्सपर्टीज थी, अभी तक आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। Thank you, Dr. Ahmad. Assalamu alaikum, everyone. So I basically trained as a chemical engineer, and after doing my master's and practicing for a bit, I switched over to project management, and I have a PhD in project management. My specialization has been 2 areas. एक तो ये कि how can we figure out that a project is successful? What is it that success is? Defining that success. And then the question comes in that once you have established the success, क्या होती है? How do you get to that success? So what are the things that you need to do to get successful? So I've spent about 25 years in project management in the industry, done some of the projects so I think everyone will be familiar with, like the ID card, the smartphones, electoral rolls, done airports, refineries, all kinds of different projects. And I think one of the interesting things that you find is that project management has a lot of versatility. You're not doing projects in one area, but you can be doing projects in all kinds of different areas. Also, professionally, I'm also one of the founders of the chapters PMIK for Islamabad and Lahore, and currently serving as the president of the PMI Lahore chapter. And PMI के जो certifications होती हैं उसमें there's something called project management professional, which is sort of like the professional certification. So I also was the first PMP in the country who involved in developing this profession from the industry side for a long time. And academia में आकर what I'm trying to do is to bring that the kind of requirements that we have in the industry, bring that to the academia so that the graduates यहाँ से निकलते हैं, they're ready for the type of work that waits for them out there. अच्छा, मैं भी जैसे खालिद साहब बता रहे थे कि आई हैव बीन आल्सो बीन एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन सिंस 2001। तो ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन है। हम इसको, जैसे खालिद साहब इज वन ऑफ द पायनियर्स, इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये प्रोफेशन जो है ये डेवलप हो रहा है। तो ओवर द 20 years पीरियड 2001 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम
PMP goals جو ہیں وہ کرنا وہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی لوگ PMP کر رہے ہیں جو کہ PMI کی ایک بڑی اچھی سرٹیفکیشن ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری کے اندر بھی بہت زیادہ چینجز اور چیلنجز آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پروفیشن اگر ہم دیکھیں, ہم لوگوں کا تعلق انڈسٹری سے ہے اور میرا فوکس زیادہ تر ٹرانسفارمیشنل اور لیڈرشپ سٹائلز کے اوپر ہے, اور میں نے اس پہ یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے یہ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے اس میں اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل کچھ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ ایک بہت براڈر ایریا ہے, اگر اس کو ہم دیکھا جائے ایٹ مائکرو لیولز تو چینج مینجمنٹ بھی اس کا ایک پارٹ ہے, بزنس ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہے, نئے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں اور براڈلی اگر اس کی امپورٹنس کیوں ہے, صرف یہ میں بتاؤں گا کہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چینج لانا ہے یا آپ نے کوئی بھی اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف پروجیکٹ مینجمنٹ. سو اس پروفیشن کے اندر اور ہمیں اس پہ آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو بیسکلی انڈسٹری کا جو گیپ ہے, جیسے خالد صاحب نے کہا, اس کو ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کلوز کرنے کی, اور دوسری جو نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہ کیونکہ ہمارا ایکسپوجر PMI USA کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے اور گلوبل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے, تو وہ جو نئے چینجز یا چیلنجز ہو رہے ہیں وہ ہم پاکستان کے اندر اس کو بہت طریقے سے بہتر طریقے سے اڈیپٹ کر سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے, اور اس پروفیشن میں چانسز آف اپرچونیٹیز کیونکہ یہ ایک نیا ایریا ہے تو ول بی گریٹر, جو میرا ماننا ہے. جی تھینک یو. جی تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہوں, اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں اپارٹ فرام جو کوشچن ہمیں ملے ہیں آلریڈی, ہم ان پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز رائٹ دیم ان دا کامنٹس سیکشن میں لکھیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکشن ویل ٹرائی ٹو آنسر دیم آل. اگر کوئی رہ چاہتے ہیں تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, اور وہاں پہ پھر آپ کو اگر کوئی کوشچن ایسا ہو کہ جس کا آپ کو آنسر نہیں ملا تو ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے. اینڈ یو کین لیو یور موبائل نمبر ایز ویل. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ایڈمیشن آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. So apart from Dr. Khalid and Dr. Kamil, we have Dr. Shazia Numan. She is also having a PhD in project management. ان کے علاوہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرس ہیں جن کا ریسرچ ایریا اور ایکسپرٹیز فائنانس کے اندر بھی ہیں. They have PhDs from abroad. We have PhDs in human resource management from different countries as well. And there are some other senior lecturers جو کہ ہمارے پاس ہیں اپنی, اور جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر اپنی PhD کو پرسو کر رہے ہیں. سو یو کین سی اور وی کین سی کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی فیکلٹی ہے اور ایسے فیکلٹی ممبرس ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں پراؤڈلی وی کین سے کہ جو ہم چاہتے ہیں, جو فیوچر کی ریکوائرمنٹ جو ڈاکٹر کامل حسن نے مینشن کی, جو ڈاکٹر خالد نے مینشن کی کہ ڈیو ٹو سی پیک ایز ویل لاٹ آف اپرچونیٹیز آر دیر, ڈفرینٹ پروجیکٹ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو کمنگ ٹو دیٹ ڈسکشن میں ڈاکٹر خالد صاحب سے پوچھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اگر آپ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اگر آفٹر دیئر انٹرمیڈیٹ وائی دے نیڈ ٹو, ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کریں, وائی پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ واٹ آر دا ایریاز دیٹ آر دیر دے کین, اور about those areas they can learn and develop their skills in the future so that کہ وہ انڈسٹری میں جب چاہے یا مارکیٹ میں چاہے they have enough opportunities کہ وہ easily وہاں پہ جابس کو فائنڈ کر سکیں and then they can go in the future. Okay. So I think the way to look at this is کہ you look at industry میں ہو کیا رہا ہے, how much of the work that is happening worldwide is related to project management. So recent estimate was کہ 25% جو global GDP ہے is spent on projects. So that's about $15 trillion a year. If that's the amount of money جو projects پہ خرچ ہو رہی ہے, تو obviously you need a lot of people. And why do you need all these projects? The reason that you need these projects now is think about the world wants to move to alternate energy. That would mean projects. You have things like 5G coming out. That needs projects. Transformation ہو رہی ہے, people, so you have reconstruction. I think climate change کی وجہ سے you have a lot of things that are happening which require reconstruction or rebuilding or doing new things. ان سب کے لیے projects چاہیے ہوتے ہیں.
एंड जब प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं ना, लाइक इफ आई टॉक टू यू उस साइड से जिस साइड पे काम हो रहा होता है, यू नो इंडस्ट्री की साइड पे, व्हाट डू वी नीड व्हेन वी वांट टू हायर पीपल? वी नीड पीपल जो दे कैन कम इन, दे अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोजेक्ट इज, एंड प्रोजेक्ट का मतलब खाली ये नहीं है कि you know, just making a schedule. I think थोड़ा सा लोगों को misconception होता है, it's just a schedule, it's not just a schedule. It's being able to define कि आप काम क्या करना चाहते हैं, और scope. It's being able to deal with risk. It's with the supply chain that's involved. It's dealing with quality issues. There's several areas जिसमें आपको काम करना पड़ता है. Which is why जब आप सोचते हो कि if you look 20 years back and said कि do we need a, I mean, low project management में कैसे आते थे? They were coming in either informally or they were coming at the master's level and maybe going to a PhD, because इतना wide area नहीं cover कर रही था profession. But now the profession has become so wide that you have now bachelors in project management is a reality, which means that by itself has become a profession. Now, how portable is your degree is important. कि अगर आप ये कर, let's say if you are a bachelor's in project management, where can you go to work? You can pretty much go to work in any kind of industry, because जहाँ भी जिस तरह Dr. Kamil said, change management transformation is up to the cycle of technology. What is like a year and a half. अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, right? So every company, as soon as they come up with a product, are already thinking about version 2, version 3. And who makes that happen is project managers. So there's a global demand for project managers, or जो I think PMI की projection is कि the worldwide demand for project managers is about 14 million तक के demand है इसकी. The amount of trained project managers in this market is about 1.5 million. So there's a tremendous amount of gap between the number of projects लोग कर रहे हैं काम, but the point is that the industry ends up taking people from other professions and training them as project managers. However, when you're coming into the market as a trained person, so obviously the industry is happy to take somebody like that. The demand is there, and it's not just locally. CPAC के अंदर डिमांड है, CPAC के अंदर you have अभी हाइड्रोज खाली देखें तो several billion dollars worth of हाइड्रोज आ रहे हैं, तो all of these require project manager. The demand traditionally Pakistan से, if I look at the last 25 years, यहाँ से project managers have been going internationally to almost all parts of the world. Middle East में बहुत हैं हमारे, places like Australia, people might not know it. When Malaysia was going through its boom of the airports और सब कुछ बन रहे थे 90s में, a lot of project managers were sourced out of Pakistan. So the demand is, it's a global profession. If you are in it, so you have at least a chance. You know that you will get something. So thank you. So Dr. Khalid has mentioned also about the relocation of industry. This is one aspect he has mentioned about the sustainability or the climate change. There are some other aspects as well. Due to cheap labor or availability of raw material, industries are moving from one location to the other, or manufacturing sites are moving from one location to the other. So for that we also need some supply chain managers. So along with project managers, when we have new project or a product or some construction project, that involves also supply chain behind that. So for every product that we see in a market or for every service, there are many organizations that are involved in the development of that product. So managing the operations within those organizations and along the supply chain to reduce the cost, to increase the revenue, to speed up the process, we need supply chain managers. So it's like this course is a mix of both project management and supply chain management, because we need them in the next few years, especially in Pakistan after the CPEC. जब हमारे पास बहुत से नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, इन फ्यूचर होंगे along the CPEC route, or in some other big and small cities जहाँ पे industry flourish करेगी, then inshallah they need more trained supply chain and project management professionals as well, nationally here as well internationally. So we are going to launch this course because we think that we need trained people जो कि हमें हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को सपोर्ट कर सके. So we need professionals, trained professionals जो कि हमें हेल्प करें हमारी इंडस्ट्री को, हमारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हो उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकें. So moving to the next question that will Dr. Kamil Hassan.
can you please tell us something about, or we have many questions from the audience, apart when हमने अपने division campaign launch की, तो we have those questions कि project managers और supply chain managers क्या करते हैं, what are their jobs, actually industry में क्या करते हैं, और after the BS program when they learn something, they new tools, they develop the skills, what will be their job in industry. अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात का है या सप्लाई चेन मैनेजर्स की बात है, ये एक बहुत होलिस्टिक एरिया है. यानी कि अगर आप ये चीज अपनी ये स्किल लेते हैं और बैचलर्स करते हैं, तो ये होलिस्टिक एरिया है. ये ना सिर्फ आपको सिखाता है प्रोक्योरमेंट का एरिया, क्वालिटी का एरिया, कॉस्ट मैनेजमेंट का एरिया, बट ये और भी काफी स्किल्स हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट की स्किल जो आजकल के दौर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये आपकी एक ग्रूमिंग कर रहा है डिफरेंट एरियाज के तौर पे. इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज आपकी किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं होती. ये अपॉर्चुनिटीज जैसे खालिद साहब ने कहा, ये काफी एरियाज पे होती है. फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट से लेके इनिशिएशन, प्लानिंग, एक्सिक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, क्लोजिंग, ये सब कुछ मैनेज कर रहा होता है. अच्छा, ये मैनेज करते साथ ये एक और इम्पोर्टेंट स्किल, एक सॉफ्ट स्किल जो कि बहुत जरूरी होती है आजकल के दौर में हर जगह पे एक्सेल करने के लिए, वो है कम्युनिकेशन. ये उसको भी इस एरिया को डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि आपने बेतहाशा स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर रहा होता है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी. तो ये उन सारे एरियाज और उन सारी स्किल्स का एक मजमूआ है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर में करता है. बाहर की जहां तक बात की खालिद साहब ने, इसलिए अगर आप देखेंगे, आप यू कैन सर्च ऑन जॉब्स के ये बड़ी जो है हाई पेड जॉब्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स की इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ये एरिया कुछ पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है. तो मे बी बट अगर कोई नया बंदा बैचलर्स कर लेता है तो देयर विल बी विद इन अ फ्यू इयर्स, क्योंकि कुछ टाइम लगता है प्रोफेशन को डेवलप होने से पाकिस्तान में. तो जो मॉडर्न एरियाज में ऑलरेडी डेवलप है, तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 5 years 6 years कि कोई बंदा अगर इसमें आ जाता है तो देयर कुड बी हाई पेड जॉब्स अवेलेबल एज ड्यू टू CPAC. और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट स्किल सप्लाई चेन, क्योंकि अब आप देख लें लॉजिस्टिक्स या वेब कॉमर्स, ये सारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में आ रही है, इनके ऊपर बैक एंड के ऊपर मटेरियल्स फ्लो कर रहे होते हैं, मटेरियल्स की फ्लो हो रहा होता है, आपने टाइमली डिलीवर करना होता है कस्टमर को. तो ये सप्लाई चेन किस तरह होती है, किस तरह वैल्यू मैपिंग होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है. सो अगर ये दो स्किल्स आपके पास इन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये होंगी, तो आई थिंक देयर कुड बी लॉट ऑफ पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी. I think just want to add उसके अंदर के even now अगर हम देखें कि and this is something that we've done studies on industry में कि what is the average salary that we are going to pay an engineer versus someone who's got project management expertise also. There is definitely a differential in terms of, I mean, value add इतनी होती है कि there's more demand for project managers. Even things like 3 से 4 साल किसी ने project management में काम किए तो you can actually see that there's a strong demand. They're probably getting 30% more than an equivalent guy जो किसी और चीज में काम कर रहा है. So the demand is definitely there for this profession. Value is there. खाली जो important चीज ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर यू मास्टर्ड ऑल द थिंग्स दैट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स फ्रॉम यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. दैट्स इम्पोर्टेंट. So moving to the next question, Dr. Hassan, Dr. Kamil Hassan and Dr. Khalid Ahmed have already addressed that. What is job scope of the project managers or supply chain managers? You have addressed that. So there is a question जो कि बहुत से लोगों ने पूछा है, why we need to go to Riphah for this degree program? Why we get admission in the RSBM, Riphah School of Business and Management, to study BS Project and Supply Chain Management. So first, Dr. Khalid, and then So
Yeah, so what I would really say is that the program that Riphah can create, it's very much aligned with what the industry requires. I think there's a lot of industry experience that you have in this program. People who work in the industry know what it requires and are now have been involved in creating the program. For instance, I'll just give you an example. This program has courses on procurement front, and its procurement it goes all the way from understanding how to decide what you need to procure, how to set those specs, how to optimize your procurement plans. Then there is risk management. We have courses which take you through risk management all the way to simulations. So the courses are basically designed to be from a practitioner point of view. Over the years, I've been in the industry and developed a lot of project management offices in the public sector. So the capabilities that we required over there, usually जब हम शुरू करते थे in units को, तो we used to train these people, even experienced people coming into these units. We used to train them for 6 months before we could use them. This program that we have is basically based on all the stuff that we were telling those doing in those trainings. So so you're not only getting the academics, but आपको वो training मिल रही है, which is like spending a couple of years in a PMO environment, because it's projectized. A lot of your courses are going to be projectized. You run through projects just like private sector के अंदर होता है. You submit reports. You learn how to present yourself. Common said something important के communication आनी चाहिए. That's another big importance. How do you get the confidence that you can communicate and be able to show some leadership when you're in a project. Those are important things. Project managers have to be people who have to deal with a lot of different disciplines. Like Amit said, एक discipline में नहीं होता. So how do you get the ability to deal with people and get them to work with you is also important. So all of that is part of the program that's being created for you. खालिद साहब ने मोस्टली चीज़ें तो मेंशन कर दी. जैसे एडिंग ऑन इट कि एक तो ये है कि जो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो इट्स मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से अब फ़ायदा ये हो रहा है कि आप मुख्तलिफ एरियाज़ के बारे में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, यू गेट टू नो अबाउट दोज एरियाज़ एंड यू डेवलप एक्सपर्टीज इन दोज एरियाज़. Secondly, the qualified faculty that we have, I don't think कि इतनी qualified faculty और किसी area पे नहीं होगी. और तीसरी बात जो बहुत important होती है वो ये होती है कि आप adaptability और changes और innovation लेके आते हैं. हमारा जो course structure है वो जो what you do right today might not be right after a year or so, or might be 2 years. So there's a constant change that is happening. There's a constant review that is happening. जो industry के अंदर चीजें implement हो रही हैं, हम उनको जो है अगर वो हम first year नहीं कर सकते, अगर हमें जैसी हमें idea होता है तो we try to implement in the second semester or a third semester. हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने वो चेंजेस जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट करें. सो कई जगहों के ऊपर ये देखा जाता है कि जो हमारा सिलेबस होता है वो आउटडेटेड हो जाता है बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इट. और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो लोग वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं एट द सेम टाइम वो फिर उतनी उनकी आपसे समझें कि उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती या उनको ज्यादा जॉब्स उस तरह नहीं बन सकती क्योंकि देयर इज अ गैप एग्जिस्टिंग. सो वो गैप जो है हमारी, मेरा ख्याल है ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से फुल कर रहे हैं. और एक चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी और बड़ी खुशरूबी से इम्प्लीमेंट हो रहा है. यस, जैसे कि डॉक्टर खालिद ने और डॉक्टर कामिल ने कहा कि हम लोग अपने कोर्सेज को इवॉल्व करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. ही हैज मेंशन समथिंग जो कि डॉक्टर खालिद साहब ने भी कहा बाद में कि जो IT companies are, for example, they are growing. E-retail sector is growing. Amazon के example हमने उससे पहले बात की. They are the one of the top companies in the world.
तो हमारा जो कोर्सेज है वो इस चीज को मद्देनजर रखकर डिजाइन किए गए कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों जो कोर एरियाज हैं, जो असेंशियल एरियाज हैं, इनको कवर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट और इन एडिशन टू दैट, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास फाइनेंस के अंदर बड़ी अच्छी फैकल्टीज हैं, अकाउंटिंग के अंदर। सो इस प्रोग्राम में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ साथ हम फाइनेंस के, अकाउंटिंग के डिफरेंट मैनेजमेंट कोर्सेज जो है और डिफरेंट मार्केटिंग के कोर्सेज हैं वो भी हम ऑफर करते हैं। तो टोटल इट्स अ 4-year प्रोग्राम। इट्स अ क्लास टाइमिंग फ्रॉम 8 to 4 PM। टोटल 133 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। 66 जो कोर्सेज जो क्रेडिट आवर्स है दे आर फॉर कोर कोर्सेज, rest are projects, internships and some community work as well, and there are some electives as well. So this program is designed specifically to cater the demand that we will have in future because of CPEC वजह से जो हमारे पास डिमांड है, जो हमें ट्रेन प्रोफेशनल्स आएंगे, we are thinking कि हम उनको इस कोर्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं वो स्किल्स। अगर कोई अपनी जॉब्स नहीं करना चाहता, कोई जॉब नहीं करना चाहता आफ्टर द BS, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना चाहता है, देन दिस कोर्स हैज कोर्स कंटेंट जिसमें वो स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं कि वो अपने फैमिली बिजनेस को प्रॉपर्ली रन कर सकें, और एटलीस्ट दे हैव दोज स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड है एट द बेसिक लेवल टू रन दोज बिजनेसेस। So apart from that, as you mentioned, there are a lot of opportunities, especially in manufacturing sector. They can go any sector, as Dr. Khalid said. They can go to automotive, they can go to pharmaceuticals, they can go to construction industry, they can go to electronic industry, and anywhere in Pakistan and outside Pakistan. So keeping that in mind, तो हमारे पास जो next question है, that is about PMI. What is PMI? And what is the association between Riphah and PMI, and how this course will help a student to get a PMP certification if they need to acquire or they are thinking to acquire after the BS program? Okay, so first of all, what is PMI? PMI is Project Management Institute, and it is the largest organization of practicing project managers worldwide. So has about 1 million members, and there are about as many certified professionals. Now, if you look at a discipline like project management, the project management जो है उसकी evolution के अंदर these professional organizations play a very big role, because these professional organizations इनके अंदर सारे जो practitioners होते हैं वो बैठकर they have to agree कि what are the things that will become a standard for us. And why do we need a standard? We need a standard ताकि common language हो जो project managers communicate कर सकें worldwide. So if you are, let's say कि आपने project management पाकिस्तान में की है and you have a job opportunity Canada में, तो you should be portable enough कि जब आप Canada में interact कर रहे होते हैं तो you're talking about the same things, and जब आप कहते हैं कि risk management plan, you understand it in the same way that somebody in Canada understands that plan. So that's what PMI does, it sets the standards. Now what we have done in this program is that we've taken the competence standards PMI ने define किए हुए. So this is the professional standards जो define हुए हैं कि what constitutes a project manager. और उनको लेकर we incorporate them in the course material, ताकि when you complete your course material you can then go and appear. अगर आप bachelor's में हो गए तो you will do something called a CAPM, but आप master's में हो गए तो you will do a PMP, which is project management professional. And by the way, we've had I think almost like 6 or 7 people from the last batch जिन्होंने PMP complete किया. Now PMP जो है is the one of the top 5 certifications globally. So this gives you a really good advantage. You have a degree from a university and you have a professional certification. The degree basically prepares you how to work in that profession, tools, techniques and whatever. The certification tells the rest of the world that you understand project management the same way the rest of the world does. So you're portable now. Nobody's gonna, if you're a PMP, nobody's challenging you आपने कहाँ से PMP किया? PMP है. It doesn't have a country label or whatever. It's global. So I think that gives you, and this is why a lot of kids go through this program.
The other thing that we also do through PMI is PMI ka they have courses for project management for life. I think Dr. Kamil can tell you more about that. And there is also something jo aap use kar sakte ho as you go through the degree to practice project management, to learn project management and apply it while you're still doing your degree. Kamil can talk more about it. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आई जस्ट स्टार्ट विद थोड़ी सी बिगनिंग के पीएमआई है क्या. पीएमआई एक बेसिकली एक ग्लोबल इदारा है और उनका एक मकसद ये है यूनिफॉर्मेशन, जैसे उन्होंने कहा कि यूज किए जाए पीएमआई की स्किल्स, और दूसरा ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि आपके चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. सो यू बिकम कि अगर आप वो प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस यूज कर पाएंगे. दूसरा ये है कि आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू गेट मोर इनसाइट, क्योंकि हमारा टाइम एक शॉर्ट है, कि pmi.org उनकी वेबसाइट है. ओवर 1 मिलियन लोग हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने पीएमपी की सर्टिफिकेशन की है. सो इट गिव्स यू एन एडवांटेज, जैसे इन्होंने बताया. और देन देयर इज दे से कि ये जो स्किल है ये हम जैसे डॉक्टर अम्बाद ने बात की कि ये जो स्किल है ये ना सिर्फ आप किसी एक जॉब मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और इट कैन बी यूज इन योर पर्सनल लाइफ. तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि पर्सनल लाइफ में आपको इसकी जरूरत आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं. एंड इट कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ एंड इट कैन हेल्प यू अचीव योर पर्सनल गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने जाना है इस्लामाबाद के लिए तो मैं उसी तरह एक प्लानिंग करूंगा, मैं उसको इनिशिएशन करूंगा, प्लानिंग करूंगा, एग्जीक्यूशन करूंगा और फिर मैं वहां जाऊंगा. इसी तरह हमारे लाइफ में कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, अपनी बर्थडे पार्टी करनी है, किसी और की बर्थडे पार्टी करनी है, तो वी नीड दिस स्किल. सो पीएमआई एक अदारा है और साथ इनका एक एजुकेशनल फंड है जिसकी ये बात कर रहे थे, PMIEF. उसके ऊपर भी आप यू कैन गो ऑन दैट वेबसाइट एंड हैव मोर नॉलेज अबाउट इट. सो दिस बेसिकली ये आपको ये कहते हैं कि ये स्किल ना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर लाइफ स्किल्स के ये ना सिर्फ आप अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं, रादर ये अपनी पर्सनल और डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो आई थिंक यू कैन हैव, हमने ब्रॉडली आपको बता दिया कि व्हाट इट हेल्प्स यू और ये अदारा क्या चीज होता है और ये क्यों जो है दुनिया की टॉप 5 सर्टिफिकेशंस में लोग करते हैं इसको. बट हैविंग अ लुक यू कैन हैव मोर डिटेल regard. Alright, thank you. So these are questions जो कि हमने इस इवेंट से पहले रिसीव हुए, तो लोग विल सी के अभी जो हमें कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हैं तो हम उनको एड्रेस करते हैं. अगर सो फार कोई क्वेश्चंस नहीं है, आई कैन सी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने अभी एड्रेस नहीं किए, वो हमने शुरू में रिसीव किए थे जब हमने इवेंट के बारे में बात की स्टूडेंट्स के साथ. तो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया क्या कितने % मार्क्स हो, तो 45% मार्क्स अगर हैं आपके इंटरमीडिएट के अंदर देन यू आर क्वालिफाइड कि आप यहाँ पे BS प्रोजेक्ट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकें. एंड देयर आर 2 intakes एज वेल. वी हैव फॉर हर साल सितंबर के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो फॉल में और फिर स्प्रिंग में हमारी जो है 2 intakes हुआ करेंगे इस प्रोग्राम के लिए. एज ए मेंशन्ड अर्लियर, जैसे मैंने पहले कहा कि 133 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है हमारा ये. तो क्लास टाइमिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे to 4 PM है. अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं यहाँ पे डॉक्टर कामिल हसन का और डॉक्टर खालिद अहमद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं हमारे पास उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, उनको प्रोजेक्ट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो BS प्रोग्राम है उसमें क्यों एनरोल करना चाहिए, रिफा क्यों ज्वाइन करनी चाहिए. इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, अगर आपको लगे रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन आवर वेब पेज. अगर आपको इस टॉक के बाद अगर आप आज लाइव नहीं आ सके, अगर आपको सुनते हैं तो आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोई अगर आपका इस प्रोग्राम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज. हमारी जो यहाँ पे एडमिशन टीम है आपसे रब्ता करेगी और इंशाल्लाह दे विल ट्राई टू हेल्प यू. तो यहाँ पे हमारी तरफ से सबके तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें.
اور امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ریفا کے اندر اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے. السلام علیکم. So we have a one question کہ اس کے credit hours کتنے ہیں. So credit hours as I said کہ اس کے 133 credit hours ہیں, 66 credit hours کے core courses ہیں, 25 credit hours کے نیشنل کوالٹی فریم ورک جو کہ MCC کی طرف سے ہے وہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. 27 credit hours کے کورسز ایسے ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر, سافٹ اسکلس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ کورسز پڑھاتے ہیں. دین دیر آر سم الیکٹیو کورسز جو مائنرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو, اینڈ دین 3 credit hours کا پروجیکٹ ہے, دین 2 credit hours کی انٹرنشپ ہے جو کہ کمپلسری ہے, سو دیٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نہ کہ جسٹ بکس کا نالج ہو ان کے پاس, بٹ دے گو ٹو دا انڈسٹری, وہاں سے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کریں. اور ایک credit hours کا ہمارا جو ہے وہ کمیونٹی ورک ہے فار 20 hours. صرف سیکنڈ کوشچن ہے PMI اور PMP کی 7th ایڈیشن کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کیا جائے. اوکے, Okay, so PMI کا جو initial standard تھا that came out in the mid 80s and that was, اور وہ جو standard تھا اس کے اندر اس طرح کہ بیسٹ پریکٹسز کیپچر کی گئی تھی and ان کو ایز اے پروسیس کیپچر کیا گیا تھا. So basically that standard set کہ اگر آپ نے پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے چارٹر بنانا ہے, تو چارٹر بنانے کے لیے آپ کو یہ انپوٹس چاہیے, یہ کام کریں اور ان میں چارٹر بن جائے گا, and so on and so forth. تو اس کے اندر ڈفرنٹ پروسیسز تھے. As the profession kept growing, تو over the years 6 standards آئے ہیں, تو وہ جو 6 different versions تھی اس میں these processes kept increasing, and one of the reasons they kept increasing is کہ آپ کے پاس you had IT, پہلے تو انجینئرنگ سے آیا تھا بٹ IT آنا شروع ہو گیا, تو it was trying to cater to both IT کے لیے which is agile and engineering which is mostly waterfall. Now 6th edition تک people realized کہ ہم we can't keep increasing this book to hundreds and hundreds of pages because what we're trying to do is to prescribe a formula for everything that's going to happen. اس کی جگہ 7th edition میں کیا ہوا ہے, 7th edition میں it's more of a principle based approach. Principle based approach means کہ these are certain things that it is a principle that you should engage with your stakeholders effectively. You should be a steward for your project. اب اس کو کیسے implement کرنا ہے is something that you can do yourself. And I think the exciting thing about this is کہ with the 7th edition جو approach آئی ہے, it allows more people to be part of the standard than before. So it's more inclusive. It allows easier integration, hybrid ہوتا ہے, like you have IT people, you have so it's not focused on one model or the other. It allows for working with multiple models. And it is part of this philosophy جو Project Management Institute کیا کہ instead of serving a smaller clientele جو بہت high value projects کرتے تھے which was the focus of the previous standards, this standard is basically going to cater for all types of different projects. And for more detail, I want to ask Dr. Kamil to answer because Dr. Kamil is also a BMI certified trainer for this edition. اچھا, یہ جو نیا ایڈیشن ہے جیسے ڈاکٹر خالد نے کہا, ایک اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اوور دا ٹائم دیکھا جا رہا ہے کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں تو اس میں ٹریڈیشنل میتھڈس کے ساتھ کام کیا گیا شروع میں, جو ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کے تھے, تو پروجیکٹ سکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ اچیو نہیں کی جا رہی تھی. ان ٹریڈیشنل واٹر فال میتھڈ ایک ہے جس تو اس کی بیس پہ انہوں نے اپنے سلیبس کو چینج کیا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 10 کمپنیز اب جو ہیں وہ موسٹلی آئی ٹی کمپنیز ہیں ٹاپ 10 کمپنیز میں. تو اس میں اس ایریا کے اندر ایک تو جاب اپرچونیٹیز اور ڈائنامکس بہت ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں اور چینجز بہت ریپڈلی آتے ہیں. تو جو نیا ان کا سلیبس ہے PMBOK 7 کا وہ اس کو کور کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسان انہوں نے بنا دی ہے. تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ جو کہ انہوں نے پہلے اپنے ایڈیشنز کے اندر کی تھی جو امپورٹنٹ ہے کہ
टेलरिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने देखना है कि वो मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ करेगा, उसने प्रोसेसेस देखने के वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में शायद बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हों, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं प्रोसेसेस वो एप्लीकेबल ना हो उसकी एनवायरनमेंट में, तो वो कैसे उसने जज करना है कि कौन से प्रोसेसेस तो उसने टेलर करना पड़ेगा। सो ये उन्होंने इस तरह के 2-3 चीजें की हैं एंड अप्रोच यही है कि जो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और जो हमारे दूसरे एरियाज के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के हैं उनको एक ही उसके ऊपर लाया जाए, और जो इवन कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको नॉलेज दिया जाए कि आईटी के अंदर ताकि उनकी चांसेस ऑफ ग्रोथ बढ़ सकें, चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी दूसरे एरियाज में काम करने के बाद। Donna, I just forgot. Another thing जो मेरे ख्याल से for me is like one of the biggest change and that interests me a lot in this book is अभी तक की जो जितनी भी एडिशंस आई थी, स्टैंडर्ड्स आई थी, they were about delivering a project. आपको एक प्रोजेक्ट दिया, whether it's a bridge or a school or whatever, आपने स्कूल बना दिया and you delivered it. That's it. As a project manager, building looks okay, everything's fitted, goodbye, thank you. Now they're saying, sorry, that's not where it ends. If you made a school, तो बच्चे आए कि नहीं आए? So the project is actually it has to bring some value. And if to bring some value, you have to, as a project manager, आपको सोचना पड़ता है कि मैं स्कूल जो बना रहा हूँ सही जगह पे भी बना रहा हूँ कि नहीं बना रहे हैं। तो बच्चे, there's a stream in the middle, there's no bridge across it. So even if the school is done to specs, it does not produce value. I think that is like a very big change. A project manager को now you have to think about whatever you're doing, why are you doing it? Is the question जो पहले नहीं था. Which is, it's a bridge banana, let's make a bridge. Now you're asking, am I making it at the right place? Is this sustainable? Can we, you know, is the traffic flow going to be interrupted because there's something, you know, ahead of the bridge, maybe road toota, whatever. So you're adding value, and I think that also for your profession, if you become project managers now, will be your focus. Okay, how do you add value? Why do these projects? You know, how does that add value? So that's a very interesting new concept. Okay, we have one more question, So we have one more question. which is very important, I think. One student is asking the job perspective in Middle East, the project management. Middle East के अंदर job perspectives simple है. If you go to any one of the job sites Middle East में and you try to type in the search, तो आप देखेंगे what are they looking for. The first thing that you're going to see is PMP. If they're looking for a project manager, they're looking for a PMP. Now, it is not enough कि आप कहें कि अच्छा मैंने PMP किया हुआ पर मैं नीचे से कुछ और पढ़कर आ गया था, because it is possible for you to appear in the exam, सही preparation करके PMP कर लें. When you land over there, they will ask you अच्छा ये procurement करना है तो उसकी procurement plan बना दो. PMP तो किया हुआ है. How do you make the procurement plan? Or somebody asks you कि आप risk management plan तो उसका मुझे रखते हैं. So unless you also know that part of it, okay, PMP tells you what you need to do, but you also know how to do that stuff. Okay, schedule karna. Things like I think earned value. You know how to do earned value. अगर ये चीजें ना आती हो तो then it's a very short trip to the interview location and you're back. If you have both, then you can be pretty much sure. I can tell you from my experience of the last 25 years of having seen people's careers, people who have done PMP and they have also developed these skills either through academics or through working in PMOs are they're doing amazing jobs. I mean, one of the people that was working on my team is now featured as project manager of the year because of the project he was doing in Australia. उनके मेट्रो के लिए. Another girl that worked for me, one of the units, is now heading a similar train project in Canada. So the careers have been fantastic, but you need both things. So the track is either go through and spend 4 or 5 years at a PMO and learn these things, or go through the academic track, learn these skills in a year and a half or whatever, and then do your PMP. In both cases, you're then well placed कि आप Middle East के अंदर job कर सकते हैं. All right. I think that was the last question. इसके बाद
ہم نے پہلے کہا کہ اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں, ایڈمیشنس کے بارے میں, جسٹ کانٹیکٹ اس. آپ ہماری ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ ہماری ایڈمیشن ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کامل صاحب, بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ٹاک کے. جو ہمارا مقصد تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ بتا سکیں جو اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس, اباؤٹ پروجیکٹ مینجمنٹ, اباؤٹ سپلائی چین مینجمنٹ, اباؤٹ ریفا, اباؤٹ PMI, کیسے ہم اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں ساتھ. اگر ہم PMP سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پھر اکیڈیمیا سے کوئی نالج ہونا چاہیے, جیسے کہ اگر اس پروگرام کے تھرو BS پروجیکٹ اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ میں ہم سیکھیں گے یا آپ سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون, جو لوگ یہاں پہ ہیں, جو لوگ لائیو تھے, آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.